Hello everyone, in the last video we saw the need and the basis for demand forecasting. Today we'll see the factors and steps. So factors influencing demand forecasting. तो कंज्यूमर्स के कंजम्पशन पैटर्न कैसे हैं एंड देयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं. देयर आर मेनी फैक्टर्स which can affect demand forecasting. So the prevailing economic conditions is the first factor that will influence demand forecasting. Second, existing conditions of the industry, and similarly the existing conditions of the organization, of an particular organization. If you remember, we had seen in the last video that the level of forecasting happens at firm level, industry level and economy level. So similarly, when we'll see the factors influencing demand forecasting, the factors can be economy level, industry level and firm level. So easy to remember the first 3 points. The level of forecasting में हमने जो पढ़ा था, the first 3 points of the factors influencing demand forecasting we have seen here. Let me also write the examples beside so that you can remember them. National and per capita income, consumption pattern of consumers, and वैसे ही organization में क्या होगा, what can be the factors that will affect? It can be plant capacity या फिर product के price, distribution policies. Okay, so next see the 4th point. पहला 3 पॉइंट में हमने देख लिया इकोनॉमिक कंडीशंस और इंडस्ट्री के कंडीशंस और ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशंस. नाउ इन द 4th पॉइंट विल सी द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस. ठीक है, जैसे कि चेंज इन गुड्स के प्राइसेस हो गए या फिर कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस आ सकते हैं, इन देयर टेस्ट, इन प्रेफरेंसेस, and also in the change in the income level of consumers. So all these things can have an effect and can be factors which can influence demand forecasting. So example में you can write change in the prices of goods या फिर कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस, उनके टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस या फिर इनकम लेवल. ठीक है. Number 5,
सोशियोलॉजिकल कंडीशंस. अब सोशियोलॉजिकल कंडीशंस में व्हाट कैन बी, फॉर एग्जांपल एक फैमिली का साइज हो गया, ठीक है, या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, साइज ऑफ फैमिली या फिर पॉपुलेशन, ठीक है, एज ग्रुप आ गया, फैमिली का इनकम आ गया. So all these things are the sociological factors and they largely impact the demand forecasting for an organizations. जैसे कि एक मार्केट है जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन यंगस्टर्स का है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा डिमांड होगा. सो सोशियोलॉजिकल कंडीशंस कैन हैव एन इफेक्ट, दे कैन बी ए फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस डिमांड फोरकास्टिंग. Number 6, psychological conditions. अब psychological factors क्या क्या हो सकते हैं? It can be changes in fashion, trends, lifestyle, perception, cultural and religious beliefs, all these things. Next will be competition or competitive conditions. So एक market में we can see there will be several organizations जो कि similar products बेच रहे होंगे, right? So this can give rise to competition in the market, जो कि demand forecasting को it will affect, obviously it will affect. When a competitor's product will enter the market या फिर exit the market. For example, a new product enters the market, ठीक है, तो many consumers will tend to purchase that product and it can create a drop in the demand for the existing product. वैसे ही when a competitor exits the market, क्या होगा? The customers of that product will tend to shift to alternative options. So the demand is expected to go up. So this is how competition can affect demand forecasting. Next we have import export policies. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के कंडीशंस क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. ऑन बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स डिमांड फोरकास्टिंग विल गेट अफेक्टेड. ये हो गया हमारा फैक्टर्स. अब व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? फैक्टर्स के बाद स्टेप्स. तो हम देखेंगे द नेक्स्ट थिंग इज स्टेप्स in demand forecasting. ठीक है, so there are 5 important steps in demand forecasting. Let me write the first 5 important steps, then I will try to give a brief on them so that you can remember them easily. So the first step is specifying the objective. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे डिमांड फोरकास्टिंग का. सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव. थर्ड है सिलेक्टिंग द method for forecasting. फोर्थ है collecting and analyzing
डेटा और पांचवा है इंटरप्रेटिंग आउटकम्स. ओके, सो दीज आर द 5 स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग. तो पहला है स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू हैव इन आवर माइंड कि हमारे इस काम को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ आवर एम. So similarly for demand forecasting also, first step is specifying the objective. So in objective we will decide कि it is a short term demand या फिर long term demand. Okay, it is a industry demand or a firm demand only of a particular organization. ठीक है, या फिर whole market demand और demand specific to a particular market segment. So this is how we will specify the objective कि हमें किसके लिए करना है और शॉर्ट टर्म के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है. ठीक है. डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड. देन सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. अब फोरकास्टिंग के विल हैव मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स, विल सी दैट इन द लेटर पॉइंट्स. तो वी हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा मेथड में वी हैव टू फोरकास्ट एंड कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है. इट विल ऑल्सो डिपेंड जो फोरकास्ट कर रहा है ऑन द डिमांड फोरकास्टर, व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, टाइम पीरियड एंड डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन विल सेलेक्ट कौन सा मेथड विल बी द मोस्ट सुइटेबल मेथड फॉर द फोरकास्टिंग. ठीक है. और हम मेथड चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, वेयर वी विल कलेक्ट द रॉ डेटा या फिर मतलब फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स या फिर सेकेंडरी सोर्स विल कलेक्ट द डेटा. एंड बिकॉज डेटा विल बी इन रॉ फॉर्म, फिर हमको करना है एनालिसिस ताकि वी कैन गेट अ meaningful information out of the data. And after we do the analysis, we will come to interpret the outcome. And this is how our 5 steps in demand forecasting will be done. Thank you.